हेलो दोस्तों, मेरा नाम है उमेश कारे। मेरे चैनल का नाम है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट कंसल्टेंसी एंड एकेडमी। आज हम जो वीडियो लेके आए दैट इज रिगार्डिंग द इन केस ऑफ द क्वालिटी प्रॉब्लम हाउ द टॉप मैनेजमेंट इज थिंकिंग, व्हाट इज द देयर ऑफ पैटर्न ऑफ थिंकिंग एज पर द स्ट्रेटेजी एंड द टैक्टिकल इश्यूज आर कंसर्न रिगार्डिंग द क्वालिटी। सो इसके बारे में बात करेंगे। ये वीडियो का आपको डेफिनेटली फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि आपका अगर थिंकिंग इफ इट इज़ इन द लाइन ऑफ द टॉप मैनेजमेंट, आपका टॉप मैनेजमेंट जो सोचता है वो, या अगर आप सोचते हो तो देन योर एक्शन एंड थिंकिंग विल बी सिमिलर टू द टॉप मैनेजमेंट, और आपको जो एक्शन इनिशिएट करने का है या कोई इम्प्रूवमेंट एक्शन इनिशिएट करने का, दैट विल बी सपोर्टेड बाय द टॉप मैनेजमेंट। सो इसका आपको बेनिफिट हो सकता है बिकॉज यू आर थिंकिंग सिमिलर टू द टॉप मैनेजमेंट। सो फॉर दैट आपको आपका थिंकिंग सिंक्रोनाइज करना पड़ेगा एज पर द टॉप मैनेजमेंट इज कंसर्न। सो लेट अस स्टार्ट द वीडियो। सो इन केस ऑफ द क्वालिटी प्रॉब्लम हाउ द टॉप मैनेजमेंट आर थिंकिंग। So top management are thinking on the three issues, that is the money, risk and company reputation as per as the strategy and tactical action are concerned. तो ये तीन चीज़ों पर टॉप मैनेजमेंट डिसाइड करता है व्हाट देयर एक्शंस विल बी। सो लेट अस स्टार्ट ऑन दैट। इनिशियली हम डिस्कस करेंगे व्हाट हाउ द टॉप मैनेजमेंट एंड बॉसेस विल थिंक अबाउट द लॉन्ग टर्म एक्शन। सो व्हाट विल बी द बिग पिक्चर, व्हाट विल बी द स्ट्रेटेजी। So top management is always thinking about the to avoiding the disaster, major issues अवॉइड करने का बेसिकली स्ट्रेटेजिक थिंकिंग रहता है टॉप मैनेजमेंट का, क्योंकि उसमें कंपनी का लॉसेस होता है, देन कंपनी लूज लॉट ऑफ मनी ऑन दैट। सो फर्स्ट इश्यू इज दैट इज द फियर ऑफ लूजिंग द कस्टमर। टॉप मैनेजमेंट को ऑलवेज ये थिंक डर रहता है कि दे शुड नॉट लूज देयर स्ट्रेटेजिक कस्टमर, बिकॉज दैट इज द प्रोवाइडिंग ब्रेड एंड बेटर टू द कस्टमर। और अगर आपका कस्टमर लूज करते हैं देन दैट कस्टमर विल गो टू द कॉम्पिटिटर्स, उसमें आपको डबल लॉस होता है बिकॉज यू विल लूज द कस्टमर एंड योर कॉम्पिटिटर विल मोर पावरफुल देन यू। सो उसमें आगे कॉम्पिटिशन में भी इसका इशू होता है। सो टॉप मैनेजमेंट ऑलवेज थिंकिंग टू गेट द गुड क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। से उसमें आपका कस्टमर सेटिस्फाई रहता है और उसका आपका ब्रांड वैल्यू रेपुटेशन भी खराब नहीं होता है। So another issue is that is the top management is always thinking of the cost of the mistake and cost of fixing that mistake. उसमें मिस्टेक का कितना कॉस्ट है और उसका कॉस्ट कितना इन्वॉल्व है टू फिक्स दैट द मिस्टेक। टॉप मैनेजमेंट इफ दे आर पॉजिटिव टू सॉल्व द क्वालिटी इश्यूज देन दे ऑलवेज डू द कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, यानी हाउ मच द कॉस्ट इज अफेक्टिंग योर बिजनेस एंड हाउ मच द रिवार्ड विल अफेक्ट टू द बिजनेस, यानी उसका आप अगर क्वालिटी इश्यूज आप सॉल्व करते हैं तो उसको कंपनी का कितना बेनिफिट रहता है। बट अगर निगेटिव माइंडेड अगर टॉप मैनेजमेंट रहेगा देन दे विल गेट अनॉयड इफ द क्वालिटी प्रॉब्लम अकर्स एंड दे डोंट थिंक अबाउट द कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। सो दिस इज द सेकंड इशू। थर्ड इशू इज दैट टॉप मैनेजमेंट इज ऑलवेज हैविंग द प्रॉब्लम दैट द मिडल मैनेजमेंट इज ऑलवेज वर्किंग लाइक ए फिल्टर, यानी दे ऑलवेज पास द गुड न्यूज टू द टॉप मैनेजमेंट। सो दैट्स व्हाई द टॉप मैनेजमेंट डोंट गेट द राइट input from the middle management, and top management knows this kind of mindset of the middle management and they are always worried that due to such kind of feedback from the middle management they should not suffer the major setback. If the major problem comes then top management will suffer from that on this issue, that is the money, then customer reputation, brand value एंड लूजिंग ऑफ द कस्टमर। ये इश्यूज पर टॉप मैनेजमेंट सफ़र कर सकता है। सो अनदर इज द हाउ द टॉप मैनेजमेंट थिंक अबाउट द शॉर्ट टर्म डिसीज, दैट इज द प्रैक्टिकल लेवल पर टॉप मैनेजमेंट कैसे सोचते हैं। टॉप मैनेजमेंट इज ऑलवेज थिंकिंग इन दिस डायरेक्शन दैट दे शुड नॉट स्किप द क्वालिटी इश्यूज अंडर द प्रेशर ऑफ द डिस्पैचेस एंड डिस्पैच क्वांटिटी। इट इज ऑलवेज टेम्पटेशन middle management and top management that they should not skip the quality issues to meet the delivery commitment. So this kind of mindset they have and they always try to see that they should not skip the quality issues. Another is that bosses don't like the surprises because the predictability in the business is very important because that gives the stability to the business. Business का अगर आपको consistently benefit अगर अचीव करना रहेगा then your business should be stable, और for that bosses is always
try to avoid the surprises, any accidents and major losses they try to avoid. For that they always try to get the indicators and signals from the manufacturing processes में छोटे छोटे जो signals रहते हैं they always try to catch that. और आप अगर ये signals catch करेंगे और management को in the right time आप अगर report करेंगे then that will be more beneficial to the top management and your growth also. Third mindset रहता है that is the obsession with the wrong numbers. क्वांटिटी डिस्पैच करने का जो ऑब्सेशन रहता है दैट इज ऑलवेज बेनिफिशियल टू द टॉप मैनेजमेंट क्योंकि उससे बिजनेस बढ़ता है. बट अनदर थिंग दैट ड्यू टू दैट ऑब्सेशन टॉप मैनेजमेंट ऑलवेज ट्राई टू प्रेशराइज एंड फोकस ऑन द क्वांटिटी नंबर्स एंड डिस्पैच नंबर्स. So that they are always thinking that should not get the obsessed with the numbers and they are always try to communicate this message to the middle management, bottom management that they should not have the obsession of the dispatch numbers. So this kind of management mindset also having, and you also think at that direction that management should not have that obsession of the dispatch numbers. So a comparison chart भी हम देखेंगे what is the big picture, that is what is strategical and tactical issues on the shop floor as far as the quality is concerned and the mindset of the top management is concerned. What the top management always care about, they care about the brand value and brand name in the market because that helps the top management to get the new market and big market depending on the brand value in the market with the customer also. Tactical में ये कैसा रिफ्लेक्ट करता है? then tactical में you have to think about that is the mindset also that reduce waste, saving time and the daily shipment goals अगर आप अचीव करेंगे then that you will be achieving your strategic goals also. So as far as the brand value and brand name is concerned, you should focus on the day to day waste reduction, time reduction, that is the wastage of the time in the process, ये आपको कम करना पड़ेगा and meet the daily shipping goals. What is the main goal of the top management? That top management is the main goal is to the mistake prevention. The mistake should be stopped before generating it. यानी zero defect जो concept है that top management is always trying to adopt. यानी अगर आप mistake नहीं करते रहेंगे then company will not suffer due to that mistake. तो इसमें टैक्टिकल में कैसा माइंडसेट रहता है दैट इज मिस्टेक प्रिवेंशन पर ज़्यादा फोकस टॉप मैनेजमेंट का रहता है. देन एवरी इशू ऑन द शॉप फ्लोर दैट शुड नॉट कन्वर्ट इनटू द मिस्टेक एंड दैट mindset has to be developed in the middle management and bottom management also. This top management is always trying to communicate to the people. Then question arises that how you can communicate with the top management, that as per as the strategic issues of the qualities and concern, how the bottom management and middle management should have the communication with the top management. So as per as the quality issues are concerned, the middle management and bottom management should not communicate in terms of the technical term, but they should discuss with the top management in the monitoring term, that is how much cost with that will affect to the company, that middle management and top management should communicate in that language. They should communicate, then that will be. So by communicating in the monitoring terms, आपके proposal, suggestions and actions का अप्रूवल टॉप मैनेजमेंट से आसानी से मिल सकता है और आपका ग्रोथ आपके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में, इंडस्ट्री में या फैक्ट्री में आपका ग्रोथ आप आसानी से सिक्योर कर सकते हैं. सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज वीडियो. हमने जो डिस्कस किया व्हाट इज़ द टॉप मैनेजमेंट माइंडसेट एज पर एज द क्वालिटीज़ एंड क्वालिटी इश्यूज आर कंसर्न इन द मैन्युफैक्चरिंग. सो नाउ वी आर क्लोजिंग द वीडियो. आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए. थैंक यू टू जॉइन माई वीडियो. थैंक यू वेरी मच.